Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम जो पैलेस्टाइन के हवाले से और गजा के हवाले से खासकर जो डोनाल्ड ट्रंप का 20 पॉइंट्स प्लान है उसके ऊपर बात करेंगे और हम बुनियादी तौर पर देखेंगे कि ये प्लान का बैकग्राउंड क्या है और इस प्लान के जो मेन या जो चीदा नुकात हैं वो क्या हैं उसकी बात करेंगे और आखिर में हम बात करेंगे कि इस प्लान का व्हाट डज दिस प्लान मीन फॉर द पीपल ऑफ गजा, फॉर पैलेस्टाइन इन जनरल एंड पीस इन द रीजन। इसके क्या तशरीहात की जा रही हैं, व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज बाय द डिफरेंट स्कॉलर्स। इन तमाम मामलात के ऊपर हम आज की इस एपिसोड में बात करेंगे और नाज़रीन ये एक बेसिक प्रिलिमिनरी एनालिसिस होगा बिकॉज इसके ऊपर, इस प्लान के ऊपर अभी बहुत सारी नेगोशिएशंस टॉक्स चल रही हैं। ऑल्दो हमास हैज पार्टली एक्सेप्टेड इट and Trump has responded positively to it, but how would Israel respond to it और इसकी मजीद फ्यूचर में क्या नेगोशिएशन हो सकती हैं, उसकी क्या डेवलपमेंट हो सकती हैं। तो एज द टाइम्स गोज ऑन हम इसके ऊपर मजीद अपना एनालिसिस जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। बट आज का एनालिसिस जो है इट इज बेस्ड ऑन वट एवर इज बीइंग स्टेटेड इन मीडिया बाय द लीडर्स एज वेल एज द स्कॉलर्स। बिफोर आई गो ऑन टू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस, ऑब्वियसली नाज़रीन आपको स्क्रीन पे नजर होगा, आई एम स्टार्टिंग अनदर कोर्स ऑन political science paper 2 as well as the only current affairs course. I think there have been demand that there should be a dedicated course on current affairs and this course is going to be for about 4 to 5 weeks course on current affairs as well as political science 2, and both these courses will be offered in the morning. This course of current affairs will not only help the CSS aspirants but also those who are appearing in the KPPMS और उनका एग्जाम obviously 20th November को है. So this course is likely to end before that and therefore it will be very much useful to all those who aspire to go for the CSS in 2026 or the PMS in 2025. अब नाज़रीन अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो हम जानते हैं कि गजा वॉर जो है इट कंटिन्यूज फॉर ऑलमोस्ट 2 years. 7 अक्टूबर को हमास के हमले के पूरे हो जाएंगे, 2 साल पूरे हो जाएंगे और इन 2 सालों में इजराइल हैज किल्ड मोर देन 66,000 पैलेस्टीनियंस एंड ऑब्वियसली मेनी मोर आर इंजर्ड। बिसाइड्स दैट हमने कहा कि जो जीनोसाइड है पैलेस्टाइन का दैट हैज बीन गोइंग ऑन सिंस लास्ट 2 years with largely international community either complicit or being silent on it, including obviously most of the Muslim world. Having said this thing, नाज़रीन, अब ये पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो है इसके हवाले से जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं he had been putting pressure on Palestinians, Arab states as well as to some extent Israelis to end this war. और उस हवाले से हम जानते हैं कि डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स शुरू किए गए बहुत अरसे से, लेकिन उसमें जो मेजर ड्रामेटिक शिफ्ट आया दैट केम आफ्टर इजराइल स्ट्रक कतर और उसके बाद हमने कहा कि जो UN जनरल असेंबली का इजलास था उसके साइड लाइन पे एक अरब और मुस्लिम ममालिक का एक ग्रुप जो है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और उसके अंदर एक 20 पॉइंट प्लान की बात की गई। ये जो 8 मुल्क है नाज़रीन, दे इंक्लूड ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट, कतर, ऑब्वियसली टर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और UAE। ये जो मेन मुल्क हैं ये वहाँ पे मुलाकात की इन्होंने और उस मुलाकात के बाद 20 पॉइंट प्लान सामने आया जिसको एंडोर्स किया पाकिस्तान ने भी और तमाम अरब स्टेट्स ने। उसके बाद लेकर हम देखा कि नेतन्याहू साहब की मीटिंग होती है विद डोनाल्ड ट्रंप और उस मीटिंग के नतीजे में जो ट्रंप हैं वो प्लान को थोड़ा अल्टर करते हैं, जिसके बाद देयर वर स्केप्टिकल व्यूज अबाउट इट और उस हवाले से जो 8 मुल्क हैं जो अरब और इस्लामी मुल्क हैं उनकी एक जॉइंट स्टेटमेंट आई विच वाज इंडिकेटेड टू बी a kind of commitment to the original plan agreed with the Arab states, Muslim states, and it was kind of rejection of the changes brought by Netanyahu along with Donald Trump. Even Pakistan went public on this regard and we said that Pakistan has committed this new plan given by Donald Trump and published by the White House is not the same as was agreed by the Arab and the Muslim states. However, having said this thing, Donald Trump जो है उन्होंने इस प्लान को इसके हवाले से he went ahead with that और उन्होंने जो हमास है उसको 3 से 4 दिन का अल्टीमेटम दिया that it has to respond within 3-4 days. कल उन्होंने अल्टीमेटम दिया, otherwise Israel will be having US support for its full might against the Hamas in Gaza. बट हमने कल देखा कि जो हमास है उसने लार्जली इसको अप्रूव किया इस प्लान को और अप्रूव भी किया और लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ वेग सी स्टेटमेंट दी। उन्होंने जो हॉस्टेज रिलीज का पॉइंट है अभी हम बात करेंगे, हॉस्टेज रिलीज के पॉइंट को एग्री किया। उन्होंने इंटरनेशनल एफर्ट्स के वजह से मुस्लिम वाले का इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और साथ ही उन्होंने
जो कुछ अहम नुकात थे, जैसे डीमिलिटाइजेशन वाली डिबेट थी, उसको उन्होंने इग्नोर किया, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को इग्नोर किया, पैलेस्टाइन के फ्यूचर के हवाले से उन्होंने इसको इग्नोर किया। तो पार्टली ही एक्सेप्टेड, उनका कुछ नुकात ऐसे हैं जिन पे नेगोशिएशंस रिक्वायर्ड है एंड हमास इज रेडी टू नेगोशिएट ऑन दोज रिमेनिंग पॉइंट्स। सो इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट हमने देखा कि उसके बाद ट्रंप ने इजराइलीज को कहा दैट यू शुड लिमिट द यूज ऑफ फोर्स, आपको फोर्स कम करना चाहिए, बिकॉज हमास लार्जली एग्रीड एंड वी आर क्लोजर देन एवर टू अ ब्रॉडर पीस इन मिडल ईस्ट एंड पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू गजा। सो नाज़रीन, इस बैकग्राउंड में अब हम आते हैं कि वो 20 पॉइंट्स प्लान के चीदा चीदा नुकात क्या हैं, उसके सैलिएंट नुकात क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इन 20 पॉइंट्स के ऊपर। नाज़रीन, अगर इन 20 पॉइंट्स को देखा जाए, जो कि पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, व्हाइट हाउस की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, मीडिया हैज कोटेड इट, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर 6-7-8 में गिनवाऊं, तो सबसे पहला पॉइंट है रिलीज ऑफ होस्टेजेस। We know that Israeli hostages are under Hamas control for the last 2 years. Most of them are either released or were killed by Israel during the military operation. But those who remain, and their number is somewhere around 20 plus, they are likely to be released under this deal. और वो जो डेड बॉडीज हैं इजरायली होस्टेजेस की, वो भी इसराइल को रिटर्न की जाएंगी अंडर दिस डील। Besides that, there will be a ceasefire होगा, और there will be a gradual phased Israeli withdrawal after certain conditions are met, obviously. Another point was the release of Palestinian prisoners. इसमें more than 1,000, तकरीबन 1,500 से ज़्यादा जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं 7 अक्टूबर के बाद जो इसराइल ने जिनको अरेस्ट किया है, जो उससे पहले जो अरेस्टेड थे, उनको रिलीज किया जाएगा, इंक्लूडिंग सम ऑफ दोज हु वर इन फॉर द लाइफ इम्प्रिजन्ड इन इजरायली जेल्स, उनको रिलीज किया जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। Another point is जो बड़ा इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, वो ये है कि वंस दिस डील इज बेसिकली फाइनलाइज्ड, तो उसके बाद जो हमास है उसको डीमिलिटराइज किया जाएगा। हमास के जो वर्कर्स हैं वो अपने आप को अपने हथियार फेंक देंगे, या वो गजा में ही रहेंगे, या अगर वो अपने मुल्कों में जाना चाहें तो उन्हें एमनेस्टी भी दी जाएगी और साथ में उन्हें सेफ पैसेज भी दिया जाएगा। लेकिन इसमें बड़ा क्लियर लिखा है, जो एमनेस्टी सिर्फ उनको है जो हथियार डालेंगे, और बाहर जाने की इजाजत भी उनको होगी जो हथियार डालेंगे जाके। Another important point is that इस region में Hamas जब lay down its arms, तो उसके बाद यहाँ पे एक kind of governing body, एक interim governing body बनाई जाएगी, जिसमें पैलेस्टीनियंस भी होंगे और इंटरनेशनल लोग भी होंगे, जिसमें टेक्नोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नेंस होगी, और उसमें एपॉलिटिकल लोग होंगे, और उसका बुनियादी मकसद जो है वो डे टू डे सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जैसे फूड हो गया, हेल्थ की फैसिलिटीज हो गई, एजुकेशन की मामलात हो गए, बेसिक डे टू डे रनिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट की जो फंक्शन है सड़क, उस तरीके से ये फंक्शन परफॉर्म करेगी। बिसाइड्स दैट, अनदर पॉइंट इज कि ये जो आपकी गवर्नमेंट होगी लोकल लेवल पे पैलेस्टीनियंस की और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की, इस गवर्नमेंट के ऊपर एक पीस बोर्ड होगा जो हेड करेगा, जिसको डोनाल्ड ट्रंप, और उसके साथ जो डिफरेंट स्टेट्स के हेड्स हैं वो शामिल होंगे, एंड दैट बोर्ड, पीस बोर्ड, वुड आल्सो इंक्लूड द टोनी ब्लेयर, द फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, एज वेल एज द यूएन रिप्रेजेंटेटिव फॉर द मिडिल ईस्ट। सो वो भी इसका पार्ट होंगे, डोनाल्ड ट्रंप उसको हेड करेंगे, और उसमें डिफरेंट मुल्क शामिल होंगे। एज्यूम ये किया जा रहा है उसमें प्रीडोमिनेंटली अरब और मुस्लिम मुल्क शामिल होंगे, जो कि ओवरसी करेगा उस इंटरिम गवर्नमेंट के अफेयर्स को। और बिसाइड्स दैट, ये जो पीस बोर्ड है, ये जो गजा है उसकी इकोनॉमिक रिवाइवल की बात करेंगे, उसमें रिकंस्ट्रक्शन की बात की गई है, उसकी इकोनॉमी बिल्ड करने की बात की गई है, उसके अंदर जो मॉडर्न मिडिल ईस्ट सिटी है वो बनाया जाएगा, और मिरेकल का वर्ड यूज किया, मिरेकल इन द मिडिल ईस्ट का वर्ड यूज किया इस प्लान के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे, इकोनॉमिक जोन बनेंगे, तो एक काइंड ऑफ रीबिल्डिंग, रिकंस्ट्रक्शन एज वेल as the rebuilding of the Palestinian economy will be overseen by this global peace board. This has been the agenda of Donald Trump for long, and this is now part of the plan. Another important part of this plan is the flow of aid. The flow of aid will be completely open in Gaza, और उसके हवाले से जो इजिप्ट है और जॉर्डन है वो ऑब्वियसली बात है कोऑर्डिनेट करेंगे विद द इजराइलीज, और वहां पे जो है वो एड जाएगी। बट दिस एड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द इधर यूएन एजेंसीज और वो इंटरनेशनल एजेंसीज जो कि न्यूट्रल समझी जाती हैं और जिनके ऊपर दोनों पार्टीज का ट्रस्ट होगा, तो वो भी इसका पार्ट है गजा के हवाले से।
Besides that, another important point is जो बहुत crucial है, that is international stabilization force. एक ऐसी force यहाँ deploy की जाएगी consisting of the different states जो partner states हैं, that we assume it consists of Indonesia, obviously बात शामिल होगा, जिसपे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब ने कहा भी है कि 20,000 soldiers from Indonesia होंगे. पाकिस्तान is considered to be one of the states जो contribute कर सकता है. अरब states भी शामिल हैं उसके अंदर जो contribute करेंगी इस international stabilization force में, जिसको बैकिंग होगी यूएन की. और इस फोर्स का बुनियादी मकसद पैलेस्टीनियन पुलिस को डेवलप करना है, पैलेस्टीनियन लॉ इन्फोर्समेंट को डेवलप करना है, ताकि अगर गजा के अंदर दोबारा कोई आर्म्ड ग्रुप शामिल हो या कोई इस तरह की स्मगलिंग हो या कोई इस तरह के सिक्योरिटी अफेयर्स होंगे, जो इंटरनल सिक्योरिटी अफेयर्स होंगे गजा के, उसके हवाले से पहले ये मैनेज करेगी और फिर उस पैलेस्टीनियन फोर्स को बिल्ड करेगी, ट्रेन करेगी, ट्रेनिंग देगी, उनको रिक्रूट करेगी. ये सारा काम जो है वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का होगा, which will be having the backing of the guarantors of this agreement as well as the UN. Another important point is because नाज़रीन यहाँ पे इंटरनेशनल जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है और फिर जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी वो इंटरिम होगी. बट वंस द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रिफॉर्म्स टेक प्लेस, और ये रिफॉर्म्स वो डिमांड है जो इजराइल और अमेरिकन हैव बीन डिमांडिंग सिंस 1990s, वो डिमांड्स अगर पूरी हो जाएंगी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अपने आप को रिफॉर्म कर देगी, करप्शन के हवाले से, अपने करिकुलम को चेंज करने के हवाले से, अपने अंदर यूनिटी क्रिएट करने के हवाले से, द पॉलिसी टुवर्ड द इजराइल, डिफरेंट किस्म की जो रिफॉर्म्स हैं वंस दे आर कैरिड आउट बाय द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, सो अल्टीमेटली गजा का कंट्रोल भी उन्हीं को ट्रांसफर कर दिया जाएगा. सो फ्रॉम इंटरिम गवर्नमेंट गवर्नेंस बॉडी, द ट्रांजिशन ऑफ पावर टुवर्ड द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, बट दैट इज लाइकली टू बी कंडीशनल टू रिफॉर्म्स इन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी. Another but very, very significant and contentious point was that Hamas will have absolute no role at all in the governance of the Gaza, directly or indirectly or in any form. ना as a charity, ना as a political force, किसी भी तरह का हमास का कोई रोल गजा में नहीं होगा. आसान से हमास will totally abdicate its role in Gaza's every affairs as such. Last but not least, नाज़रीन, इसमें बड़ा क्लियरली कहा गया that this whole plan and the points about it, they will ultimately lead to the establishment of the right of self-determination and a statehood of the Palestinians. In other words, जो टू स्टेट सोल्यूशन की बात की जा रही है उसको भी एंडोर्स किया गया इस प्लान के अंदर. अब नाज़रीन इस लास्ट पार्ट के ऊपर आते हैं कि व्हाट डज दिस प्लान मीन फॉर गजा, फॉर हमास एंड फॉर the peace generally in the region. नाज़रीन अगर मैं गजा के बारे से बात करूं तो obviously this plan has given some kind of hope of peace and ending of genocide in Gaza. But क्या ये genocide in Gaza खत्म होना, that's a hope that we might see over there. But क्या ये reprieve जो मिल रहा है, ये एक किस्म का relief जो गजा को मिल रहा है, क्या ये किस कास्ट पे मिल रहा है? तो नाज़रीन इस हवाले से बहुत से डिफरेंट स्कॉलर्स का ये व्यू है दैट ये जो डील है या ये जो ऑफर है, दिस इज वर्स देन द ओस्लो अकॉर्ड्स. वी नो दैट द रियल प्रॉब्लम्स इन ओस्लो वाज दैट नॉट ऑल पैलेस्टीनियंस वर ऑन बोर्ड. द प्रॉब्लम विद ओस्लो वाज दैट अ लॉट ऑफ द ओस्लो अकॉर्ड वाज लेफ्ट ऑन द इंटेंशंस, द गुडविल of the Israel and the role of Americans to ensure that Israel follows this deal. And this time too, a lot of these kind of conditions जो हैं, they are directed towards Palestine, they are directed towards Hamas. Everything is demanded from Hamas. The only thing that is demanded from Israel is to withdraw its forces. But when Israel withdraws its forces, it will not be filled by the Palestinians, rather by ultimately a peace board headed by the United States, the most important backer of Israel. In other words, नाज़रीन, मैं कह सकता हूं that this plan envisages an indirect role of Israel in the governance of Palestine and particularly the Gaza through its allies, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो जॉर्डन हो. ये स्टेट्स ऐसी है जो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर चुकी हैं. They stand largely with Israel, and besides that, उसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकर ऑफ द इजराइल, विल हैव अल्टीमेट कंट्रोल ओवर एंड विल बी द डिसीजन मेकर ऑन गजा. सो ओस्लो में एटलीस्ट देयर वाज अ रियल पॉसिबिलिटी ऑफ
having an independent sovereign Palestinian state. That's at least what was agreed upon. But in this case, the sovereignty of Palestinian state was, and independence of Palestinian state was given only 1 out of 20 points, and therefore it is generally believed that this plan is meant to primarily deal with the Israel's demand, and the broader Palestinian demand of having a statehood is largely put in the last part, the most unimportant part and the most vague part of this plan. For many scholars, नाज़रीन इस plan का एक और drawback ये है that this plan is actually giving a Muslim face to what Israel and United States wanted. In other words, the major Muslim countries, Pakistan being the only nuclear Muslim state, Indonesia being the largest Muslim country in the world, Arab state being the stakeholder, the neighbors of obviously जो Hamas हैं, neighbor of Palestine or Israel हैं, all are backing this plan. For many scholars, the ultimate authority would not be in the hands of these states, rather in the hands of Israel and in the hands of the United States. Therefore, for many scholars, it is a cover of having a de facto control of Israel through directly as well as through United States, but giving it a color that it is the Palestinians, it is the Muslim states, it's the Arab states that are ultimately coming directly in contact with Hamas. दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं that this plan brings Hamas and other groups and factions in Palestine in direct conflict with the Arab world and the Muslim world in case the plan goes wrong. And Israel and the United States could have a face saving on that. So they would have the real power, but in case the situation goes bad, it turns bad, just like the Oslo, then the onus would be on the Muslim and Arab states, and Israel could only have a face saving for itself. But to conclude, Nazreen, हम कह सकते हैं that this plan might be a bad deal, but the real question is what other options Palestinians have. We have seen that almost all the attempts by the international community and the Muslim world have failed. How half-hearted these plans or efforts were, that's a separate debate, but nothing had stopped Israel from committing genocide in Gaza. So at this point of time, the questions that we need to ask: should Palestinians continue to lose lives, continue to be victims of the Israeli genocide, or they should accept a plan that turns them nothing but slaves, not just at the hands of Israel, but all foreign actors. Therefore, they might have a bad option and they might have a worse option. This plan might not be a good option, it might be a bad option, but better than the worst option. Thank you so much, Nazim, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe to this channel. Allah Hafiz.